सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं पिछले मॉड्यूल्स में जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ जेनेटिक रिसोर्स, एंड इसके साथ ही हमने डिफरेंट टाइप के जेनेटिक रिसोर्सेज को डिस्कस किया, लाइक प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इन्वर्टिब्रेट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म जेनेटिक रिसोर्सेज, फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सेज, और साथ साथ हमने इन जेनेटिक रिसोर्सेज के डिफरेंट डिफरेंट सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस किया। इस मॉड्यूल में हम सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि इन जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों होती है। So, in this module, we discuss significance of genetic resources and need for conservation of genetic resources. First of all, we'll read about classification of resources. Here we classify resources into three main categories. First category is natural resources, second is human resources, and third is man-made resources, or we can call these resources as capital resources. First of all, we'll discuss natural resources. Natural resources refers to the materials or substances such as minerals, forest, water, and fertile land that occur in nature and can be used for economic gain. They cannot be manufactured by humans, although they can be influenced. You cannot magically build a tree, however, you can grow one or even a forest. The second category, human resources or human capital, refers to people who make up the workforce of an organization, business sector, or economy. Human resource is simply another way of saying people who work or have job. And the third category, which is man-made resources or the capital resources, this category refers to the goods made and used to produce other goods and services. For example, machinery in factory or different items that this factory makes. All these different categories are the different classes of resources, and here we will discuss just natural resources. So, genetic resources are sometimes called the first resources of natural resource on this planet, the other being land, air and water. Dear student, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि रिसोर्सेज की थ्री टाइप्स हैं, और जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्स को डिस्कस किया और हमने ये कहा कि ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि मैन मेड नहीं होते, ये नेचुरल फॉर्म में होते हैं, जिसमें एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, लाइफ, ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज इसी नेचुरल रिसोर्सेज के फर्स्ट रिसोर्स कंसिडर होते हैं, जबकि बाकी रिसोर्सेज में एयर आ सकता है, वाटर आ सकता है, एयर, वाटर और लैंड, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, लेकिन मेन प्रायोरिटी जो इसमें है वो बाकी जेनेटिक रिसोर्सेज को शामिल है. सो वी कैन कंसीडर दीज जेनेटिक रिसोर्सेज एज फर्स्ट रिसोर्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. The diversity of genetic resources for food and agriculture, for example, plants or crops, animal, aquatic resources, forest, microorganism, and invertebrate, and we know that all these are different types of genetic resources which we have discussed in the previous module in types of genetic resources. All these plays a crucial role in meeting basic human food and nutritional need. और ये भी हमने लास्ट मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि किस तरह से जो डिफरेंट डाइवर्सिटी है इन जेनेटिक रिसोर्सेज में, और जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे तो ये जो डाइवर्सिटी है ये ह्यूमन की जो बेसिक फूड नीड है, न्यूट्रिशनल नीड है, इसको किस तरह से फुलफ़िल करती है, किस तरह से हमें फूड प्रोवाइड करती है. तो ये भी इन रिसोर्सेज की सिग्निफिकेंट है कि ये तमाम रिसोर्सेज, चाहे वो प्लांट रिसोर्सेज हों,
चाहे एनिमल रिसोर्सेज हो, प्लांट रिसोर्सेज में हम डिफरेंट टाइप के फ्रूट, वेजिटेबल और डिफरेंट प्लांट प्रोडक्ट्स हासिल कर रहे हैं। इसी तरह से एनिमल्स की बात करें, हम मीट, मिल्क, बोन्स, मसल्स, डिफरेंट चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। एक्वेटिक रिसोर्सेज में फ़िश हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड है, और भी डिफरेंट जो मैरीन और वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, कि हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड हैं। इसी तरह से फॉरेस्ट हमें टिम्बर प्रोवाइड कर रहा है। और लेकिन अगर साथ हम फूड की बात करें, अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें, तो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हम इन फॉरेस्ट से हासिल कर रहे हैं। इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एंड इस तरह से इनवर्टिब्रेट्स, हम नेक्स्ट मॉड्यूल में इन तमाम जो टाइप्स हैं जेनेटिक रिसोर्सेज की, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और तमाम इन डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज की जो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम जेनेटिक रिसोर्सेज हमारी फूड और न्यूट्रिशनल नीड को फुलफिल कर रहे हैं। It is essential for maintaining and enhancing the efficiency and the resilience of production system, as well as contributing to sustainable diets and to the delivery of ecosystem services such as pest and disease regulation. Genes are linked from generation to generation of all living matter. Therefore, attention to genetic resources means attention to the vast diversity among and between species of animals, plants, and microorganisms. Dear student, as you know that what are genes? Genes are basically the hereditary unit, and these genes are linked from generation to generation. These genes pass the genetic information from one generation to other generation. So through these genes, both generations are linked to each other. So we can say that genes are the link from generation to generation of all living matter. So if we're talking about the conservation of genetic resources, or if we're simply talking about genetic resources and we give attention to these genetic resources, then it means that we are giving attention to different plants, animals, microorganism on their gene level. हम इसके साथ हम genetic resources को conserve करने का मतलब ये है कि हम उन genes को भी conserve कर रहे हैं, जो कि generation to generation एक link build up कर रही हैं. Genetic resources must be maintained as an investment for the future, and that's a very critical point, very important point, कि हम इन जेनेटिक रिसोर्सेज की मेंटेनेंस पर के लिए भरपूर कोशिश करें कि हम इनको मेंटेन रखें, कंजर्व करें. वी शुड कंजर्व एंड वी शुड मेंटेन दीज जेनेटिक रिसोर्सेज, ताकि हम फ्यूचर में इन जेनेटिक रिसोर्सेज से फ़ायदा ले सकें, और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी इन जेनेटिक रिसोर्सेज से हमारी तरह फ़ायदा ले सकें. Genetic resources are of tremendous practical and historical significance for human life, from daily survival to generating the wealth of nations, yet their crucial role in supporting human society is frequently overlooked and undervalued. Genetic conservation is an integral part of much broader activity concerned with protecting the many plants, animals, microorganisms, and communities of organisms that help to mold and stabilize the environment and maintain the quality of air, water, and soil. जब हम जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बात करते हैं, then it means that we are talking about, or we are trying about to conserve different type of living organism, different type, those living organism may be a different animal, different plants, different microorganism. तो इन एनिमल्स को, प्लांट्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कंजर्व कर रहे हैं, और इनकी कंजर्वेशन से हम अपने इन्वायरमेंट को स्टेबलाइज कर रहे हैं, हम अपनी इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लेवल पर हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, स्टेबलाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. अगर हम यहाँ सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो ये डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी के अलावा डिफरेंट जो
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। चलो ये एक इंडस्ट्री लेवल पर आ जाता है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ इकोसिस्टम की बात करें तो डिफरेंट टाइप की इन्वर्टिब्रेट्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में, इस तरह से बायो फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और ये बायो फर्टिलाइज़र ये हमारी सॉइल को फर्टाइल कर रहे हैं। तो इस तरह से, और इसी तरह से अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स, एज वी नो दैट प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं। प्लांट्स आर सोर्स ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन फॉर अस, और ये हमारे इन्वायरमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे इन्वायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड से फ्री हो जाते हैं इस तरह से। तो ये जो अब इस तरह से प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट को स्टेबलाइज कर रहे हैं, एंड सेम लाइक एनिमल्स। तो ये जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करते हैं, इनके जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, इट मीन्स दैट हम अपने इन्वायरमेंट को स्टेबलाइज कर रहे हैं, हमने अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, हमने अपने एयर, वाटर एंड सॉइल जो क्वालिटी थी उसको मेंटेन किया है। Here we will discuss about conservation, the conservation of genetic resources, that why there is need to conserve these genetic resources. Conservation ensure the future generation will benefit from Earth's biological resources. Conserving genetic resources is a means of safeguarding the living material exploited by agriculture, industry, forestry, and aquaculture to provide food, feed, medicines, fiber for clothing, and furnishing fuel for cooking and heating, and food and industrial products of microbial activity. कंजर्वेशन, जब भी हम किसी जेनेटिक रिसोर्स को कंजर्व करते हैं, इट मीन्स दैट हम अपनी आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उन तक उन रिसोर्सेज को पहुंचा रहे हैं, उन तमाम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को पहुंचा रहे हैं, ताकि वो जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। और इस तरह से ये जो जेनेटिक रिसोर्सेज की कंजर्वेशन है, ये एक तरह से इन तमाम लिविंग मटेरियल को को हेल्प कर रही है, उनको एक तरह से उनकी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, ताकि जो डिफरेंट टाइप के थ्रेट्स हैं वो उन तक ना पहुंच सकें। और जैसे एक्सप्लॉइटिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट्री एंड एक्वाकल्चर टू प्रोवाइड फूड, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उन तक एक कांस्टेंट सप्लाई पहुंचती रहे, तमाम जनरेशन तक मेडिसिन, फूड, जो कि वो तमाम प्रोडक्ट्स जो कि हम इन जेनेटिक रिसोर्सेज से हासिल कर रहे हैं वो पहुँचते रहें। जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया गया, फूड, फीड, मेडिसिन, फाइबर फॉर क्लॉथिंग, furnishing, fuel for cooking and heating, and the food and industrial products of microbial activity, and all these are different products which we get will get from the use of these different type of genetic resources on the different level. So dear students, in this module you have learned about significance of different type of genetic resources. You have learned about that how different type of genetic resources are playing an important role in this environment, in this planet, and why we need to conserve these genetic resources. And if we don't conserve these genetic resources, then it means that we are going to deprive our future generation from their basic need, from these basic biological resources. In next module, you will learn about plant genetic resources for food and agriculture. Thank you.